नमस्कार, स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की शुरुआत। खेल महाकुंभ ओपन हैंडबॉल टूर्नामेंट का आनंद जिले में आयोजित किया गया, जहां हमारे वलसाड जिले के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 जून से 6 जून तक किया गया था, जिसमें ओपन श्रेणी में पहली बार वलसाड जिले को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें रज्जू श्रॉफ यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके टीम का नेतृत्व किया। गुजरात में पहली बार क्रिया आधारित वापी हैंडबॉल लीग 2.0 का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं का समर्थन करना है और इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसके आयोजन रज्जू श्रॉफ राफेल यूनिवर्सिटी, ABVP वापी व रोटरेक्ट वापी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ट्विन सिटी वापी द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज। विशाल डॉलर અત્યારે માઇનસમાં ચાલે, ભાવ ડાઉન છે। દિવ્યરાજ બેસ્ટ પ્લેયર, સચિન જાદુભાઈ काली लाइक बाहुबली। साहब एक मिनट, आ 4 ऑफिशियलों ने फाइनल में वगाड़ी तो तेजस पटेल साहब, रूपेश, नवीन, खूब अभिनंदन पाठवा ऑफिशियलोને બધાને સફળ બનાવવામાં સૌથી મોટો હાર આમનો છે। એક ટીમ ફોટો ખેલ મહાકુંભની જે ઓપન ટુર્નામેન્ટ થઈ હતી હેન્ડબોલની, તેમાં આણંદ ખાતે અમારા ત્યાં રજૂ પ્રોપર યુનિવર્સિટીના 3 વિદ્યાર્થીઓ સત્યમ, અમલ અને અમરજીત ત્યાં આગળ રિપ્રેઝેન્ટ કરી હતી। એમની સાથે ગુજરાત પોલીસની ટીમ પણ હતી અને જેમાં સર્વપ્રથમવાર વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં હેન્ડબોલ ઓપન ટુર્નામેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને વિદ્યાર્થીઓ આવેલા છે। મારું નામ ડોક્ટર ચિંતન પટેલ છે અને અહીંયા વાપી ખાતે વાપી હેન્ડબોલ લીગ 2.0 નું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આ જે આયોજન થઈ રહ્યું છે એ ઓપ્શનાઇઝડ, જેમ IPL ગેમ થતી હોય છે ક્રિકેટની, એવી જ રીતે આ ગેમનું પ્રદર્શન અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનું આયોજન 8 અને 9 જૂને વાપી ખાતે રોફેલ કોલેજમાં થઈ રહ્યું છે। આનું આયોજન જે છે ABVP વાપી, રોટરેક્ટ વાપી દ્વારા થઈ રહ્યું છે અને જેને સપોર્ટમાં રાજુભાઈ શ્રોફ યુનિવર્સિટી વાપી અને ટ્વિન સિટી ક્લિનિક વાપી સપોર્ટ કરી રહ્યો છે અને એનું આખું જે ડાયરેક્શનલ ગોલ છે એ ધવલભાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। એ પણ બોલી દે ને સર, કેટલી ટીમો પાર્ટિસિપેટ કરી રહી છે? આમાં 6 ટીમો પાર્ટિસિપેટ કરી રહી છે અને આખા ગુજરાતના, ડિસ્ટ્રિક્ટના, નેશનલના અને ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં જે હેન્ડબોલને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા પ્લેયર્સ આ ગેમમાં આવી રહ્યા છે। સર, એમને શું ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઇડ કરવામાં આવી છે આપણા તરફથી? અહીંયા આ વખતે જે છે એમાં બધી જ વસ્તુ ફ્રી છે, કોઈનો ચાર્જ લેવામાં નથી આવ્યો। રહેવાનું, ખાવાનું અને ગેમ રમવાનું બધું જ ફ્રી છે, પ્લસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે। અને ગેમનું ઇનોગ્રેશન આપણા કેબિનેટ मिनिस्टर कनुभाई श्रीना हस्ते થવામાં આવવાનું છે। जय श्री राम, मेरा नाम धवल माड़िया है। मैं रजू श्रॉफ यूनिवर्सिटी में एज ए कोच तरीके हैंडबॉल कोचिंग कराता हूँ। हमने बहुत टाइम से वापी हैंडबॉल लीग के बारे में प्लान आउट किया था। लास्ट 3 मंथ से हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। वापी हैंडबॉल लीग जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसका मेन मोटिव ये है कि हमें एक यूथ के लिए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है, जिससे अब जो हमारे बच्चे हैं वो स्टेट लेवल तक ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट लास्ट 3 दिन पहले ही हमारे बच्चों ने स्टेट पे भी गोल्ड मेडल लिया है। कुछ बच्चे हमारे CISF के उसमें भी भर्ती हुए हैं
तो हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल तक पहुंचे, ऐसी हमारी आशा है। और वापी हैंडबॉल लीग जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उसमें मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप सब आके इस गेम को थोड़ा प्रोत्साहित करें। मेरा नाम सत्यम गौतम है। मैं रज्जू श्रॉफ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट को खेल महाकुंभ स्टेट में आनंद में रिप्रेजेंट किया हूँ। तो 3 to 6 टूर्नामेंट था, उसमें 9 टीम पार्टिसिपेट की थी। उसमें से हम पूरा लीग मैच था, उसमें हम सबसे अच्छी टीम वहाँ पे भावनगर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात उनको हराकर हमने अपना चैंपियनशिप पाया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज़ और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.